Okay guys, now we have section 4. Whatever you lose in section 4, you can find in section 3, you can find in section 4, right? So section 4, complete the notes below, write one word only for each answer. No number, nothing else, one single word will decide. Now there is a specific technique to find the answers for section 4, which I'm going to share with you question by question. Let's take a start. Question number 31. Studying geography helps us understand. Okay, underline studying geography helps understand. Effects of different processes on the dash of the earth. Dash of the earth means something related to the earth. Surface of the earth, bottom of the earth, middle of the earth, or anything like that. So when they've used the word of the earth, of the, sometimes for of they use apostrophe s. For example, earth's bottom, earth's something. Okay, so they might use apostrophe s, but let's see. Answer is related to the earth, right? Let's see what that is. You will hear a lecturer's introduction to a geography module. So, welcome to your introductory geography lecture. We'll begin with some basics. Firstly, what do we learn by studying geography? Well, we learn a great deal about all the processes that have affected and that continue to affect the Earth's surface. The Earth's surface, right? They use the word Earth's, and this is very common. Off अगर लिखा होगा तो ऑडियो में apostrophe बोलेंगे, अगर apostrophe लिखा होगा तो ऑडियो में off बोलेंगे. ठीक है, ये एक आपने टिप सीख ली. Let's go on. Question number 32. हाँ, अगर तो ऑफ लिखा होगा क्वेश्चन में तो ऑडियो में अपॉस्ट्रोफी के साथ वर्ड आएगा अर्थ्स सरफेस, और अगर यहां पे अपॉस्ट्रोफी होगा तो वहां पे ऑफ आएगा. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 32. डायनेमिक बिटवीन डैश एंड पॉपुलेशन. अब जरा देखिएगा, आंसर आपका आएगा पॉपुलेशन के साथ, पहले या बाद में. बिटवीन की जगह पे वर्ड आ सकता है अमंग या कोई और ऐसा वर्ड, right? So dynamic between dash and population, right? Let's see what that is. But we learn far more than that, because studying geography also informs us about the different kinds of relationships that develop between a particular environment and the people that live there. Very good. और population के लिए क्या word आया? People that live there. समझ रहे हैं? Environment and people that live there. So population की जगह पे people that live there, right? अब अगर आप फर्ज करें, लिख लेते हैं गलती से people and population, एक ही चीज है. ठीक है, आंसर लिखने के बाद जो 10 मिनट है ना ट्रांसफर करने के, वहां पे ये हल्की सी नजर भी डालनी है कि जो मैंने आंसर लिखा है ग्रामेटिकली फिट भी आ रहा है या नहीं. वहां पे आंसर चेंज तो नहीं होगा, ऑडियो तो नहीं चलेगी, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर राइट है या नहीं है. ओके, टू मेन ब्रांचेस ऑफ स्टडी. अब जरा सुनिएगा, जब भी वो वर्ड यूज करें ना टू का, यहां पे आएगी साइन पोस्ट लैंग्वेज. अब साइन पोस्ट लैंग्वेज क्या, एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसके लिए बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर बोलेंगे फर्स्टली, या फिर बोलेंगे द फर्स्ट. और आपका आंसर है सेकंड पॉइंट में, सेकंड बुलेट पॉइंट में, उसके लिए बोलेंगे सेकेंडली, या फिर बोलेंगे नंबर 2, या फिर बोलेंगे आफ्टर दिस, या फिर बोलेंगे अनदर फैक्टर, अनदर. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन लाइफस्टाइल एंड देयर. अब मुझे जरा बताएं, देयर का वर्ड वापस किधर जा रहा है? ह्यूमन पे जा रहा है. ह्यूमन लाइफस्टाइल एंड देयर. देयर का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन. ह्यूमन लाइफस्टाइल्स एंड देयर डैश. देयर मींस ह्यूमन की ही कोई चीज है. ठीक है, लेट्स सी. Okay, we like to think of geography as having two main branches. There's the study of the nature of our planet, its physical features, what it actually looks like, and then there's the study of the ways in which we choose to live and of the impact of those on our planet. Our current use of carbon fuels is a good example of that. Lifestyle के लिए आ गया the way we live and the impact of those on our planet. So human lifestyle and their impact. Sorry, lifestyles का word क्या है? देयर का वर्ड क्या है? लाइफस्टाइल्स पे, नॉट ह्यूमन. ह्यूमन लाइफस्टाइल्स एंड देयर. सो एक्चुअली जो वर्ड है ना देयर, ये जाएगा दोनों पे, ह्यूमन लाइफस्टाइल्स एंड देयर, मतलब इंसानों का लाइफस्टाइल और उनका व्हाटएवर. प्लीज लिसन अगेन.
Okay, we like to think of geography as having two main branches. There's the study of the nature of our planet, its physical features, what it actually looks like, and then there's the study of the ways in which we choose to live. Study of the ways in which we choose to live. We का word आ गया human के लिए. Study of ways we live का word आ गया lifestyle के लिए. And of the impact of those on our planet. And the impact of those on our planet. अब जरा गौर से सुनिएगा, there की जगह पे word आ गया those. आया कि नहीं? Impact of those, their impact. अब their those वाला जो है इसको भी जरा ज़हन में रखिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 34, स्पेसिफिक स्टडी एरियाज. बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपने एक सीक्वेंस पे चलना है. पता है क्या है? बोल रहे हैं बायोफिजिकल, टोपोग्राफिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड. अब जब वर्ड आए ना हिस्टोरिकल का, उससे अगला आपका आंसर होगा. और ये सारे क्या हैं? ये सब्जेक्ट्स के नाम है. क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक स्टडी एरियाज. ये सारे के सारे स्टडी एरियाज हैं. हिस्टोरिकल के बाद आएगा आंसर. और फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, मतलब कॉमा जो है ना दैट विल हेल्प यू. एंड डैश जियोग्राफी, और उसके बाद कॉमा है. डैश जियोग्राफी का मतलब है टाइप ऑफ जियोग्राफी. हो सकता है सोशल जियोग्राफी, हो सकता है पॉलिटिकल जियोग्राफी, हो सकता है केमिकल जियोग्राफी. मतलब द आंसर इज गोइंग टू कम आफ्टर हिस्टोरिकल एंड इट इज गोइंग टू क्वालिफाई द वर्ड जियोग्राफी. ठीक है? But there are more specific study areas to consider too, and we'll be looking at each of these in turn throughout the semester. These include biophysical geography, by which I mean the study of the natural environment and all its living things. Then there's topography. That looks at the shapes of the land and oceans. There's the study of political geography and social geography too, of course, which is the study of communities of people. We have economic geography, in which we examine all kinds of resources and their use, agriculture, for example. Next comes historical geography, the understanding of how people and their environments and the ways they interact have changed over a period of time. And urban geography. Good. And urban. देखा आराम से वेट किया, पहले एक बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. एंड अर्बन. और हिस्टोरिकल जब आया तो आपको अलर्ट हो गया कि आंसर यहां पे आ रहे हैं. इस तरीके से लिस्टिंग करेंगे, आसान हो जाएगा. अर्बन. ओके, क्वेश्चन नंबर 35, की पॉइंट. Geography helps us to understand our surroundings and the associated. अंडरलाइन करें associated को, और यहां पे लिखें relate to them. Relate to, associated, relate to. Geography helps us के लिए आ गया human. Understand our surrounding. Surrounding का मतलब होगा areas which are around us. And the associated dash. Associated की जगह कोई भी वर्ड आ सकता है, मतलब जैसे मैंने बोला related to या relate to. Okay, let's see. So, to summarise before we continue, we now have our key answer. Studying this subject is important because without geographical knowledge, we would know very little about our surroundings and we wouldn't be able to identify all the problems that relate to them. Identify all the problems that relate to them. So, associated problems. Problems relate to them means associated problems. ठीक हो गया? चलें जी, आगे चलते हैं. What do geographers do? अब geographers क्या करते हैं? पहला आपका बुलेट पॉइंट है. Find data, e.g. conduct census, collect information in the form of dash using computer. अब जो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं किस फॉर्म में होती है? न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, पिक्चोरल फॉर्म में होती है. उस फॉर्म को लिखना है यूजिंग कंप्यूटर, और ये काम वो कंप्यूटर को यूज करके करते हैं. ठीक है? अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, दैट्स व्हाट वी गॉट टू फाइंड. Okay, now for some practicalities. What do geographers actually do? Well, we collect data to begin with. You'll be doing a lot of that on your first field trip. How do we do this? There are several means. We might, for example, conduct a census, count a population in a given area perhaps.
We also need images of the Earth's surface, which we can produce by means of computer generation technology or with the help of satellite relays. Images, well done. Collect information in the form of images. दोबारा सुने. Okay, now for some practicalities. What do geographers actually do? Well, we collect data to begin with. You'll be doing a lot of that on your first field trip. How do we do this? There are several means. We might, for example, conduct a census. अब यहां तक आ गया EG का वर्ड for example. अब इसके बाद अगला कॉमा यहां पे आंसर आएगा. Count a population in a given area, perhaps. We also need images of the Earth's surface, which we can produce by means of computer We also need images of Earth's surface, which we do using computer and all that. Collect information in the form of images. Okay, question number 37. Analyze data. Identify dash. Identify को underline करें और यहां पे लिखें look for. Identify, look for. Analyze data, look for dash. For example, cause and effect. ठीक है? So let's see what this is. After we've gathered our information, we must analyze it. We need to look for patterns, most commonly those of causes and consequences. We need to look for patterns, most commonly known as causes and consequences. Effect की जगह पे आ गया consequences, patterns, P-A-T-T-E-R-N, जिसको नहीं pattern कहते हैं, pattern, patterns. Okay, now maps की बात हो रही है. Option A, maps. पहले 2 पॉइंट्स में क्वेश्चन नहीं है तो ऑडियो को तहम्मुल से सुनना है जब तक वो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं. बट अ 2 डायमेंशनल मैप, जब वो ऑडियो में बोले ना 2 डायमेंशनल मैप, इसका मतलब है यहां पे आंसर होगा. और जहां पे आंसर नहीं है ना, उस पॉइंट को पढ़ना नहीं है, सिर्फ वहां पे एक वर्ड अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको पता हो कि ऑडियो अब यहां पे पहुंच गई है. राइट? बट अ 2 डायमेंशनल मैप विल ऑलवेज हैव सम. अब जरा सोचिएगा, 2 डायमेंशनल मैप विल ऑलवेज हैव सम. सम का मतलब है आंसर विल बी प्लूरल, प्लूरल नाउन. राइट? सो लेट्स सी व्हाट डू दे से अबाउट दैट. ओके, एक चीज और लिखें यहां पे, सम की जगह पे लिखें सर्टन डिग्री ऑफ. फर्स्ट करें आंसर है सम प्रॉब्लम्स, सर्टन डिग्री ऑफ प्रॉब्लम्स, सर्टन डिग्री ऑफ. पार्ट 4 में इस तरह की वर्डिंग यूज होती है और ये आपने जब भी टेस्ट करना है ना, पार्ट 4 में ये वर्ड्स ऑडियो से ढूंढ के टेस्ट पे लिखने हैं, जो क्वेश्चन बुकलेट है ना वहां पे लिखने हैं. राइट? लेट्स सी. And one way in which this information can be published is in the form of maps. You'll all have used one at some stage of your life already. Let's consider the benefits of maps from a geographer's perspective. Maps can be folded and put in a pocket and can provide a great store of reference when they're collected into an atlas. They can depict the physical features of the entire planet if necessary, or just a small part of it in much greater detail. But there is a drawback. You can't exactly replicate something that is 3-dimensional, like our planet, on a flat piece of paper, because paper has only 2 dimensions. And that means there'll always be a certain degree of distortion on a map. It can't be avoided. Certain degree of and some. Right? They didn't use anything plural, distortion. वैसे आप distortions भी लिख सकते हैं. आंसर की में distortions भी दिया हुआ है. ठीक हो गया? समझ आ गया? अब पार्ट 4 में some का वर्ड आएगा तो फोकस करना है certain degree of. कोई और वर्ड भी हो सकता है उसका सिनोनिम. ऑप्शन बी, एरियल फोटोज. एरियल फोटोज पता है क्या होती हैं? जो ऊपर जहाज से तस्वीरें लेते हैं, एरियल फोटोज. कैन शो वेजिटेशन प्रॉब्लम्स. आगे आ गया कॉमा, यानी एरियल फोटोज कैन शो वेजिटेशन प्रॉब्लम्स. डैश डेंसिटी. डेंसिटी का वर्ड अंडरलाइन करें. डेंसिटी नहीं होती किसी चीज की कसाफत, थिकनेस एंड ऑल दैट. डेंसिटी की जगह पे लिखें हाउ मच. फर्स्ट करें पॉपुलेशन डेंसिटी, हाउ मच पॉपुलेशन. ठीक है? किसी भी चीज की डेंसिटी, ओशन फ्लोर एंड ऑल दैट. अब आंसर आपका आएगा ओशन फ्लोर से पहले और वेजिटेशन प्रॉब्लम्स के बाद. और वेजिटेशन की जगह पे वो ट्रीज, प्लांट्स,
फील्ड्स, क्रॉप्स का वर्ड लगा सकते हैं. वेजिटेशन उसी को, जो भी ग्रीन चीज है ना उसको वेजिटेशन कहते हैं, जो पौधे वगैरह हैं. सो We can also use aerial photographs, pictures taken by cameras at high altitude above the Earth. These are great for showing all kinds of geographical features that are not easy to see from the ground. You can easily illustrate areas of diseased trees, or how much traffic is on the roads at a given time, or information about deep seabeds, for example. traffic density, how much traffic on the road, density of traffic on the road, how much traffic on the road. समझ रहे हैं ना बात को? Good. Okay, आगे चलते हैं. Landsat pictures sent to receiving stations. Okay, used for monitoring dash conditions. Now कुछ भी हो सकता है, atmospheric conditions, environmental conditions and all that. Okay. All right. अच्छा, आगे दिया हुआ है ETC. अब जरा इन दोनों को अंडरलाइन करें, कंडीशंस और ETC को अंडरलाइन करें. ठीक है, यहां पे लिखे इंफॉर्मेशन अबाउट, यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग डैश कंडीशंस मींस यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट, और उसके बाद जो भी बोलेंगे दैट कैन बी योर आंसर. लेट्स सी. Then there are Landsats. These are satellites that circle the Earth and transmit visual information to computers at receiving stations. They circle the Earth several times a day and can provide a massive information. You'll all be familiar with the information they give us about the weather, for example. Good. You'll all be familiar with the information they give us about the weather, for example. Right? So weather conditions, और conditions की जगह पे word आ गया information about the weather, for example. All right. So actually this is how we solved one test. अब आप लोगों ने क्या करना है, जब भी IELTS लिसनिंग करें इसी तरीके से खुद को IELTS लिसनिंग पढ़ाना है. ठीक है, हर क्वेश्चन पे फोकस करना है. पहले एक पूरा टेस्ट कर लें, फुल टेस्ट करें, उसके बाद जो आपकी मिस्टेक्स हैं वहां पे ऑडियो को 1 by 1 चलाएं, एंड यू कैन प्रैक्टिस लाइक दैट. राइट. थैंक यू.